Okay. Very good afternoon to all of you. Now Good afternoon, ma'am. we have completed. Good afternoon, ma'am. Okay. I think today you will get the portion of FA4 formative test. आपका 4 portion मिल जाएगा. Okay. What is the portion of PT4? Portion you will get today. Today we are discussing. You will get in the message WhatsApp group. Okay. You will get the message. Today you will get the message. Okay. Wait for few hours only. Last 3 chapters it will come. How much completed after that it will come. Now, how much we have completed? Homework you have completed or any doubt? Ma'am, worksheet 3, question number 2, 3. Worksheet 3. Wait, I am just opening the book. Worksheet 3, question number 2, 3. What problem you have? 3. See, two angles are same in two triangle, ABC triangle, BCD triangle. Two triangles is given in which angle B 20 degree ABD angle is equal to DCA angle 20 degree. Next, angle side will be BC. BC is the common side for both the triangles. Are you getting my point? Yes, ma'am. और shall I draw the figure? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो हम फिगर ड्रा करेंगे बोर्ड में. मैम फिगर ड्रॉ कर दीजिए. कर दें. ओके. Worksheet 3, question number 2, 3. Like this, the figure is given A, B, C, D. Okay, this angle is 20 degree. This is also 20 degree. Now, this will be 40 degree. Now, this is 40 degree. See, A, B, C triangle. Now, B, C, D triangle. This is 40 and this is 40 degree. These two angles are same. Okay. टोटल मिलाकर ये टोटल मिलाकर एक एंगल हो जाएगा ABC एंगल इज इक्वल टू ABC एंगल इज इक्वल टू DCB एंगल. ओके, कैन वी से ABC ये टोटल बिग एंगल इज इक्वल टू टोटल बिग एंगल. दोनों सेम हो सकता है कि नहीं? देन BC is equal to common side now AC B angle, this angle is equal to AC B angle is equal to this angle in this triangle. You see AC B triangle में this angle is equal to, you see this is DBC angle which is equal to 40 degree. Are you getting? Is it visible to all of you? हाँ. Yes, ma'am. इसीलिए ये बड़ा एंगल जो है, देखो ट्राइंगल यू सी ABC ट्राइंगल, ये पूरा एंगल दिस विल बी द सेम एज दिस.
टोटल मिलाकर दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60. So we can say ABC angle is equal to DCB angle. Okay, ये दोनों एंगल सेम हो गया. A next side BC is the common side for both the triangles BC AS. Then third one is this angle. See, in this triangle this angle is equal to, ये triangle देखो ABC triangle, this angle 40 degree which is equal to 40 degree. So according to the condition of the congruence ASA angle side angle, these two triangles are congruent. Okay. Okay, ma'am. Okay. Or any other question? Next, we will move to the right angle hypotenuse side congruence condition. Yesterday we have discussed about that. Worksheet 4. Worksheet 4 question number 1. ABC is isosceles with AB equal to AC and AD is the altitude from A on BC. Altitude means it makes 90 degree to the base or to the given line. Okay. Now, is triangle ABD is congruent to triangle ACD? Yes, ma'am. Yes. How? State the three pairs of matching parts you have used to answer I. Tell me, who will say? Everybody open your camera. I will ask one by one taking your names. Who will say? Already Okay, we have ma'am. discussed about that. Who is waiting now? Participants. Fahad Ahmad. Before 5 minutes he is waiting. Ashish Singh. Okay. You tell me. You open your camera. Yes. हाँ, कैमरा ऑन करो. हाँ. Yes, ma'am. Okay, very good. Ma'am, first angle ABD, angle ADB is equal to angle ADC. हाँ. BD is equal to D, and angle AB is equal to AC. Side AB equal to AC. That is hypotenuse. Yes, दोनों ma'am. का hypotenuse. Okay. RHS. Other side. Angle BD is equal to DC. No, not correct. Any other? Two condition you have given correct, but third one is not correct. RHS. R means right angle, H means hypotenuse, or S one side. Any other? Who wants to give the answer? Honey. Who is raising? Honey Kumari. Yes, ma'am. Open your camera and tell me. Ma'am, answer AB is equals to AC given, हाँ. AD is equal to AD common side, and ADB is equals to ADC given altitude of BC. Very good. Very good. Ashish, are you getting? AD is the common side. You can't say BD equal to CD. BD equal to CD. After congruent, you will get by the CPCT, congruence parts of, corresponding parts of congruent triangle. Okay. I am writing here. Yes. हाँ, वो आप जो बताए वो गलत हो जाएगा. You know, what's it for? RHS. RHS you have to show. Question number 1. First one, R means right angle you have to show. ADB angle is equal to ADC.
Second one, hypotenuse. Hypotenuse is AB equal to AC given. AB is equal to AC, which is given. Isosceles Good afternoon, ma'am. triangle. Yes. Now one side AD is equal to common side. AD is common side for both the triangle. That is the RHS. Understood now? Yes, ma'am. Okay, everybody got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, question number 3. Is it true to say that BD equal to CD? Now, you will say yes. Okay? Yes. हाँ. By Why? CP. Why? By CP. बाय CPCT. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे ही अगर क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्टली देखो, इसमें आपको 6 नंबर का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो कितना आसान है. आप तीनों कंडीशन आपको दिखाना है. उसके बाद आप पहले से अगर BD इक्वल टू CD लिख दिए तो इट विल बी रॉन्ग. ओके, ये आफ्टर कंग्रुएंट, ये कंग्रुएंस दिखाने के बाद आपका आएगा BD इक्वल टू CD. क्वेश्चन में भी देखो सीरियली आपको दिया है, नीचे दिया है, उसको भी ध्यान दीजिएगा. हर क्वेश्चन में कुछ कुछ आंसर रहता है. दोज हु आर वेरी क्लेवर दे कैन गेट इट. ओके, आपकी भी खुद को अपने से बहुत अच्छा क्लेवर मानो और देखना है वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन दिया है. कुछ कुछ क्वेश्चन में से आप आंसर यू कैन गेट इट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. मैम, हाँ, मैम BD और CD अगर हम सब ट्रू कहेंगे तो उसमें हम सब BC को बेस मान सकते हैं. हाँ, क्या पूछ रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग. अगेन यू आस्क मी. मैम क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर हो सकता है BD is equal to CD because BC is the base. नो नो नो, बिकॉज CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal. ये लिखना है आपको, अदरवाइज इट विल रॉन्ग. मैम एक बार ये समझा दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. अच्छा, हम लिख देते हैं. देखो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड बीट का आंसर, फर्स्ट वन यू राइट डाउन इज दिस. यस, ओके. देन दिया है व्हाई, बिकॉज it satisfies RHS condition. Because it satisfies RHS condition means right angle hypotenuse side condition. Then question number 2 has given state the 3 pairs of matching parts you have used in answer I. ओके, ये तीनों आप यहाँ पे भी 1 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं. ओके, ये दो, ये आंसर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए. नाउ थर्ड में व्हाट यू हैव टू राइट इन थर्ड. इज इट ट्रू टू से दैट BD इक्वल टू CD? यस, BD इज इक्वल टू CD. व्हाई? बिकॉज of CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal. ये लिखना है. अगर ये नहीं लिखकर इसको खोल करके आप लिख सकते हैं because corresponding parts of congruent triangles are equal. Because the corresponding parts of note it down, congruent triangles are equal. ये लिखना है. अदरवाइज आप शॉर्ट फॉर्म में CPCT यू कैन राइट डाउन. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. नोट इट डाउन. आप इसको लिखना है, आप नहीं लिखिएगा ये बेस है,
या फिर कोई लिख सकता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये सब अगर लिखेंगे तो आप 0 मार्क आपको मिलेगा। आई एम टेलिंग, यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर। Yes, BD equal to CD because the corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay. अगर नहीं दिख रहा है, I am writing now. BD equal to CD because the corresponding parts of congruent triangles are equal. और कोई आप लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बिकॉज, और भी ये भी लिख सकते हैं आप बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। इतना लिखे, नहीं तो लिख दीजिएगा बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन अगर आप लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC देन यू विल गेट 0 मार्क। Okay? Okay, ma'am. Okay. Now, next. Which question we will discuss? Which pairs of triangle are congruent by RHS congruence condition? If congruent, write the results in symbolic form. Question number 2. Have you any doubt? No, ma'am, no doubts. Ma'am, question number 3. 3. Okay. See what the question has given. QS and RT are the altitudes of triangle PQR. You know what is the meaning of altitude? Altitude, the line segment Yes, ma'am. joining from any vertex to opposite side, it makes 90 degree is the base. Okay. Then QS equal to RT. QS is equal to RT. Okay. Now, each triangle QRS is congruent to RQT by RHS congruence condition. Who will say? Who will say yes or no? You are not getting. Ma'am, answer will be yes. Answer yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. RHS condition. See, question number 2. Now, draw the figure, everybody. Figure खुद draw करो. Now, this is P, Q, R, S, T, and this is 90 degree, this is 90 degree. Okay. Now, ये 90 डिग्री हो गया, ये ट्राइंगल में देखो, this is 90 degree, opposite of 90 degree, the side which is opposite of 90 degree, this is hypotenuse for this triangle, and in this triangle, this also hypotenuse, देखिए, so this is common side, once same for both the triangles. Q, पहला क्वेश्चन में हम लिखेंगे yes, write down yes, triangle QRS is congruent to triangle RQT. Yes. अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया है, खाली दिया है is triangle QRS is congruent to triangle RQT by RHS congruence condition. Yes. Then second one.
Second one, state the three pairs of corresponding parts which make the triangle congruent. The first, you know, RH is 90 degree. Okay. Ma'am, QS is equals to RT given. Is equal Hence, to R is equal to R is equal to PQ and RSQ. Q RSQ Q is equal to 90 PR. degree. Then QR is the common side. QR is equal to QR, or you can write common side. Then third one, already in your question is given QS equal to SQ. थोड़ा सा ये ना ये इस साइड लिखा है, इधर नीचे जगह नहीं है. सेकेंड वन कंडीशंस, दैट इज QT R angle is equal to RSQ. RSQ angle is equal to 90 degree. Then what will be the hypotenuse? QR is equal to QR. This is common side. Then QRT, in your question it is given QS is equal to RT. That three conditions satisfied. RHS. Are you getting? RHS. Yes. Okay. ये हो गया आपका. नेक्स्ट और क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, 2 क्वेश्चन दिया है, हो गया. हम सोचे कि और भी क्वेश्चन होगा, नहीं है, 2 क्वेश्चन. बन जाएगा. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ये सब 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड वेरी इजी ऑल्सो. हाँ, कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, so that you can get 3 marks 4 marks 5 marks full marks you can get it from these questions. Next, question number 4. You see question number 4 in figure 9.4. बन जाएगा. angle B is equal to angle P is equal Ma'am, ये छोड़ दीजिए. हाँ 90 degree. Side AB equal to PR. AB is equal to PR, which is equal to 4 centimeter. What additional information is required to make triangle ABC is congruent to triangle AC is equals to RQ? RQ. Very good. AC equal to RQ. Very good. Everybody get it? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, Yes, ma'am. question number 5. In figure 9.41, AC equal to DB, AC equal to DB, and AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC. Also, DC is perpendicular to BC. State which of the following statement is true. कौन सा स्टेटमेंट? देखो यहाँ पे आप कैसे भी करके नहीं लिख सकते हैं. ट्राइंगल ABC is congruent to DBC, या फिर ABC is False. false. Very good. First one is false. Then second one ABC DCB Ma'am, true. true. Yes. Then third one ABC is congruent to BCD False. false. Very good. State the 3 pairs of matching parts you have used to arrive at your answer. 3 parts. Ma'am, first angle ABC is equal to angle DCB. BC is common in both side and side AC is equal to DB. Very good. हाँ, very good. Now, और एक क्वेश्चन दिया है. Which side is equal to side AB? DC. Huh? DC. DC. You can't say CD. Ma'am, DC. AB has given, then you will tell DC, not CD. Okay, why? Why? Ma'am, by TPCT. हाँ, CPCT. because of CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. Very good. Now, value-based question. Have you doubt in value-based question, or you can do it?
No, ma'am. No. No, ma'am. No. Do it. Now, brain teacher. Ma'am, question number 2. Value base का 2 number. 2. Aditi wanted to make a crown for her sister who was going to act as a queen in a school program. She found a used cardboard of length 24 centimeter and breadth 20 centimeter. She drew two congruent triangles after making the midpoint of the length as x. Then she decorated the crown with beads and stars. Her sister was very happy to see the beautiful crown. What congruence criteria did Aditi use here? कौन सा कंडीशन से वो यूज की है इधर? एस 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 या फिर एस एस? Ma'am, RHS. Side. No, yes, ma'am, side. At the side. मैम क्योंकि 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दो साइड होगा और एक एंगल हो जाएगा. हाँ, एक एंगल हो जाएगा. इसका मतलब है साइड एंगल साइड. यस. Okay, ma'am. 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह सकते हैं, बट साइड एंगल साइड ये कह सकते हैं हम. ओके, एस ए एस क्राइटेरिया कैन सेटिस्फाई. मैम आरएचएस से नहीं हो सकता है. आरएचएस आप Yes, ma'am, RHS से तो हो सकता है. क्योंकि वो 90 डिग्री. Yes, ma'am. लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दो चीज आ रहा है क्योंकि कार्डबोर्ड दिया है. कार्डबोर्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है ना. तो she found a used cardboard. Cardboard always be straight line. Yes, RHS you can write. Otherwise you can write SAS also correct. You can write down. Both are correct. कार्डबोर्ड स्ट्रेट लाइन भी होता है तो इट मेक्स 90 डिग्री. इट मीन्स ओके. तो यू कैन राइट डाउन टू कंडीशन जैसे कि RHS और यू कैन राइट डाउन SS. ओके. Okay, ma'am. Okay. Two Okay, ma'am. criteria you can write down. Both are correct. Next, brain teaser. Have you doubt in brain teaser? Ma'am, in question number 5. 5. Yes, ma'am. Okay. In figure 9.43, P, Q are points on equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC such that AP is equal to AQ. AQ. Then proof that BQ is equal to CP. ये तो after congruent you can say BQ equal to CP. We have to show that these two triangles are congruent. Okay. Which triangles? We will show BCQ triangle and BCQ and CBP. Okay. या फिर we can say PBC QCB. ये दो ट्राइंगल हम लोग कंग्रुएंट अगर कर सकते हैं then we can say BQ is equal to CP. Then what has given? Equal sides AB and AC. AB equal to AC has given. Okay. No, we will take other two triangle ABQ and APC. दोनों साइड सेम है. AB and AC सेम है. Or anything is given? No. Okay. Now we will draw the figure. Question number 5. A
this is P and this is Q. PQ. Now AP equal to AQ. AP is equal to AQ. This is given. Okay. Then we will prove that BQ equal to CP. BQ is equal to CP. Mom, your voice is not coming. We will take these two triangle BCP. Okay. We will take two triangle BCP triangle BCP. Then this triangle we will take BCP. Then BCQ. And triangle BCQ. See, BCP triangle, this and this triangle. Okay, you know angle B is equal. It will take angle B is equal to BCQ. Angle B is equal to angle C. Okay. Now side, you can say BC is the common side. BC equal to common side. Then other side you see, as we know, AB equal to AC and AP equal to AQ. Then we can say BP equal to CQ. BP is equal to CQ. Are you getting my point? Ma'am, can you repeat again? Okay, wait. Now, Yes, ma'am. देखो, now it is visible. Okay. See, the two triangle I have written here BCP या फिर PBC. You can write down PBC, QCB. Here I am writing PBC triangle and QCB. Now it will be very much clear. PBC triangle you take. Okay. Next one is QCB triangle. What? BP is equal to CQ. It is not given, but it is given AB equal to AC given and AP equal to AQ Yes, also ma'am. given. ये पूरा लाइन आपका AC के साथ सेम था और AP equal to AQ दिया है. मैम, दोनों equal है. Obviously PB is तो मैम, equal to CQ. Here I must write down AB equal to AC as given. Already AB is equal to AQ given. Then if you minus AB minus AP is equal to AC minus AQ. AB से अगर हम माइनस AP कर रहे हैं, also AC से AQ माइनस कर रहे हैं, then what left? PB is equal to QC. ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं? जो हम लिखे हैं PP is equal to CQ. मैम, थोड़ा सा कैमरा की उधर कीजिए ना, बोर्ड नहीं दिख रहा है. हाँ, देखो, दिख रहा है. यस मैम. देखो, यस मैम, दिख रहा है. ओके. हम ऐसे बता रहे हैं, आप सुन लो. AB equal to AC था और AP equal to AQ था, तो obviously we can say BP equal to CQ और angle B equal to angle C as isosceles triangle. Okay. Then BC side is the common for both the triangle. Then we can say triangle PBC is
कंडीशन के हिसाब से both triangle are congruent, then we can say then BQ is equal to CP because of CPCT. Because of CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay? और एनी डाउट? Yes, समझ में आ गया है कि नहीं? जो चीज आपको दिया रहता है वही जो ट्राइंगल में आता है वो दोनों ट्राइंगल को आपको पहले कंग्रुएंट दिखाना पड़ेगा. ओके? उसके बाद आफ्टर कंग्रुएंट we can say the corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, next. Question number 6. Have you doubt in question number 6? नो मैम आप आगे का क्वेश्चन होमवर्क दे दीजिएगा, डाउट होगा तो कल पूछ लेंगे. Okay, Hart's enrichment questions, 2 question is given, Hart's 2 question and question number 6, 7. These are all your homework. Okay, you do practice. And for your FA4 portion, I think it may come perimeter and area. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल तो नहीं होगा. बिफोर दैट कंग्रुएंट ट्राइंगल्स. हाँ, ये तो फर्स्ट टर्म का पोर्शन था ना. यस मैम. मैम फिर क्या चैप्टर 12 डाटा नहीं है वो होगा, लेकिन मैम चैप्टर 14 तो प्रैक्टिकल है, बस उसमें कुछ ही कुछ क्वेश्चन विजुअलाइजिंग सॉलिड आ सकता है बेटा, आ सकता है. पेरीमीटर एरिया आ सकता है. हैंडलिंग एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड. देखो आज आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा ये मैसेज. ओके मैम PT4 ऑफलाइन होगा ना? हाँ मैम PT4 ऑफलाइन होगा. हाँ यस. देखो स्कूल अगर ओपन हो जाएगा तो ऑफलाइन ही होगा. मैम 7 से स्कूल खुल जाएगा. अभी तो न्यूज में जैसे आ रहा है, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बट स्कूल से जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब हमको पता चलेगा. जो आप देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं. न्यूज में तो आया है, देखो क्या हो रहा है. खुल तो जाएगा लग रहा है. और एनीथिंग? नो मैम. ओके नाउ. ओके मैम. ओके बाय. बाय मैम. हाँ बाय. पूरे एग्जैक्ट टाइम में हम बाय बोले